Hello, friends. A warm welcome. And in the continuing series of taking up very important themes where we go for detailed and a very, very comprehensive one-to-one discussion without rushing through it or without making it a full factoid base, let's try to see that when we take up the theme of art and culture in digital age, art and culture in the 21st century, or to be more specific, in the second, where we are moving towards the third decade as such of the 21st century. How does it matter to India? What is the core? What is the core agenda, core concern, or core element when I say art and culture and digital age? So, Ashik, can you identify 4 or 5 key themes by which you can justify art and culture and its relationship or its connectivity or its impact or its combination with respect to digital age? So in the era of digital age, art and culture is becoming more accessible to Mhm. everyone. They can sell art online. Second Mhm. would be it helps in So, so, preservation so, and so conservation first, of first point intangible is first point you are saying accessibility. is that accessibility. So you want to say there is an impact of digital technology, impact of digital technology Yes, on the accessibility of art forms through digital media, through social media. yes. Okay, that's what you're saying. That is one. Social media or any other platform, sir. Then Second, a new era. It is helping to innovate innovative art form. It is, for example, inclusion of NFT, even new types of art form. It is creating. So that means innovation in the power of art as a form of self-expression. How it self-expression. is Yes. becoming a form of self-expression, and Mm. you can bring here role of artificial intelligence also. Yes. NFT, artificial Any more? intelligence, Any more and themes? generative AI. Any more Third themes? would be yes. Third would be it awareness of the people with regarding to the art form. For example, uh, preservation of existing intangible art So and culture heritage. traditional Tradition. art Yes. forms, how they are conserved and preserved in Yeah. modern. Yes. So we can also talk about digital tourism, like online aartis hoti hai, so they can be accessed. Correct. I agree with that. Yes. Mansi, what is art? Sir, art is something which is not defined or which is not uniform. अरे भाई इसकी The जगह ये बोलो ना Sir, वो है क्या, आप ये क्यों बोल रहे हो क्या नहीं है? What is art? sir, नहीं let her art talk. is creativity and innovativeness around, which is an expression to. Correct. human So, expression. Hmm. so it is a human expression. Art is something which you can experience, which is perceived by our senses, and which is visible around us. So Sir, art is beyond mental thinking. It is part of mental faculties and beyond mental faculties. Yes, Oshi. it is boundaryless. Yes, It uses several types of expression correct. for eyesight. Even it is, for example, musical art. For Yes. example, painting, drawing, even Painting, uh, art, culture. sculptures, So cultures, here I everything, would say heritage, and then you have tangible heritage, that is monumental heritage. You have textiles, you have metal which can be works and support, replicated, and sir. then you have intangible heritage, music, music, folk dance, and folk traditions, mythology, legends. This is all intangible. So one is tangible, other is intangible. So field of art and culture, they are changing dramatically. They are changing dramatically and rapidly in digital age because no boundaries are there. Creation, consumption, and then appreciation. Very rapid speed it is happening. Interactive tales and stories are there. Podcasts are Mm. there. Durga Puja, pandals. I am in Delhi. I can see what is happening in Calcutta. I am in London. I can see what is happening Ganga Aarti in Haridwar. Internet superstars are there now. Super influencers are there.
viral content, Ganpati Bappa Moria, Eid, Christmas celebrations, transmedia experiences, transmedia, captured on camera, converted into a collage, created into a short movie, storytelling. Virtual exhibitions are there. No need to go anywhere. Just sit on your tab, laptop, or phone and just watch, immerse. Virtual tours. And as Ashik said, art world shaped by non-fungible tokens. Question has already been asked on NFT long back. यूनिक बना देता है, यूनिक प्रॉपर्टी आईडी की तरह, सोर्स ऑफ वेल्थ हो गया, सोर्स ऑफ वेल्थ तो हुई गया। यानी कि हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सपीरियंशियल डिस्प्लेज आर देयर, experiential displays are there. So technology is impacting and ethical consideration becomes very, very important. Very important. Cross-cultural interactions are there. Demos can become it is for complete eradication of polio, or whether it is human papillomavirus, cervical cancer, or whether it is, awareness for food consumption and so on. So digital era, that is how it is. So as Ashik, we already said, art is a form of human brain's potential for creation, and it is a vibrant form of life. So traditional art forms, when they are linked with digitization, like pottery artisans हैं, sculptor हैं, designer हैं, glass हैं, one district one product भी आ जाएगा इसमें। अब उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर कंप्यूटर कोड्स यू आर यूजिंग, यूनिक आर्ट वर्क्स आप क्रिएट कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, इंस्टेंट शेयर भी कर रहे हो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी भी हो रही है, एक्सपेरिमेंटेशन भी हो रहा है, 2D 3D सब हो रहा है, रिवोल्यूशनरी आइडियाज भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, जब इनमें VR और AR भी यूज करेंगे, एज अ टूरिज्म सेक्रेटरी आप क्या स्कीम बनाएंगे, या क्या आपकी स्कीम का इंटीग्रल पार्ट होगा जिससे आप आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को ना सिर्फ अलाइव रखेंगे, ना सिर्फ उनकी ऑथेंटिसिटी को वॉच करेंगे, बट यू विल ऑल्सो मेक श्योर दैट considerable employment is generated in this. Tell me. So as a tourism secretary, first and foremost task will be taken up. First would be the mapping of the several region and what region produces which kind of art. It should be mapped out. Then on the basis of that, village level tourism as well as village level entrepreneurship must be promoted with the help of GI tag, even one district, one product. Then collaboration with the NGO, civil society, as well as new media. For example, online sale of beadry wear, even online sale of the several art forms such as Pattachitra in ONDC, even e-commerce business, etc., can be promoted. And the third would be focusing on Mela. For example, big fair, Pushkar fair, even in Delhi, it is focusing on Delhi Heart, that is how to connect the village artisan to the international tourism. That can be promoted. Even railway station and airport can become a very important source for revenue of the generating art. And so, and in this way, we can promote and conserve the artists Okay. and the art forms. And Use Mansi, key phrases like market access would be one major focus area. Secondly, sir, capacity generation and training so that we can also include the youth and making it a reliable livelihood opportunity and option rather than it being seasonal. okay. Something which Ashik is missing, Mansi, if you would love to take up that element which is not taken up. The preservation of art, like art and culture. So like we were talking about monumental heritage. So it's preservation and ensuring that it is being ethically used also when we're talking about our traditional practices. Correct. So one element which Ashik must have taken up, that many art forms are dying. How to, take up that?
Many art forms are dying, intangible heritage, sir, the and art we form. must do something to protect them. So When for it that, बोले बोले हाँ बोले. so for that, CSR is funding is also there, and at the same time, cataloging of such kind of art in a display manner can be done, so that in every region there would be some kind of art which is dying, which can be promoted by the state government through the use of official meeting or even official organization. For example, certain Mela, even uh, Bharat Mandapam, etc. Through that kind of project, street art and other art can be promoted. So like even through the GEM portal also, government is giving more priority to the traditional arts, like for the purpose of decor. So procuring them as a priority, that is also one of the ways. Okay. Ashik, coming to the next question, popular music in India. Like when we speak about music, then Mansi, can you tell me that theatre music, what was called in ancient times? What theatre was called in ancient times? So I can't अरे रिकॉल का तो कुछ है ही नहीं इसमें. औशिक आप बताइए. recall, मतलब सर term. नाट्य 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 बिल्कुल सही शास्त्र कहा. तो उसके नाट्य शास्त्र भी शास्त्र था, था. भरत तो मुनि, थिएटर म्यूजिक हो गया नाट्य संगीत, संगीत. और बाकी आपका गीत हो गया. ओके, दैट बिकम्स गीत. नाट्य संगीत मतलब नाट्य उसमें संगीत ड्रामा भी है थिएटर, और संगीत भी है, म्यूजिक भी. बिल्कुल. देन नाट्य गीत, दे वर सॉन्ग बेस्ड ऑन राग्स, दैट इज कॉल्ड नाट्य गीत. सो नाट्य गीत, नाट्य संगीत, देयर आर टू थिंग्स. सो नाट्य गीत में क्या होंगे? आलाप, आलाप हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जैसे होता है, ये आलाप से. Then there will be more and more improvisations, more and more ragas will be created, rich literature, quality of singing. तो नाट्य संगीत became a popular form. उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोग भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, जैसे विष्णुदास भावे. विष्णुदास भावे वॉज द फर्स्ट संगीत नाटक. अगर आप महाराष्ट्र की बात करो, 1840s में हो रहा है ये, सोचिए आप. 1840s संगीत नाटक वर रिटन बाय मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज. किर्लोस्कर साहब, गोविंद बलाल देवल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम. और आप लोगों ने बाद में सुना ही होगा बाल गंधर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है बाल गंधर्व जी का नाम. तो पॉपुलर म्यूजिक डिजिटल एज में जब हम बात करते हैं, तो इंडिया में लता मंगेशकर, और जो हम उनकी बात करते हैं, एक तरीके से गुरु थी वो तो. फिर बैंड म्यूजिक आ गया आपका 1980s के बाद. अब तो कंसर्ट की बात हम करते हैं, आजकल तो ऑनलाइन कंसर्ट की बात भी होती है. और फिर रीजनल म्यूजिक भी पॉपुलर हुआ. तो आशिक, जैसे मैंने बोला नाट्य संगीत तो आपने बता दिया. भाव संगीत क्या होता है आशिक? व्हाट इज भाव संगीत? सर नेम सर, भाव मतलब कि हाँ, फीलिंग्स और फीलिंग. इमोशन. थ्रू द म्यूजिक फीलिंग, थ्रू द म्यूजिक इमोशन कैन बी shown, sir. मानसी, व्हाट इज भजन? So bhajan is related to more of like religious or connect with the God. So Devotional songs. डिवोशनल. भजन मीन्स डिवोशनल. Mhm. भक्ति ऑल्सो इज डिवोशनल. Mhm. देन बंदिश. आशिक, व्हाट इज बंदिश? So बंदिश is a part of हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जिसमें ताल भी है और एक तरह से मेलेडी भी है. मेलेडी मेलेडी, भी हाँ होगा, मेलेडी, रिदम भी होगा, वर्ड. रिदम भी हो, वर्ड्स भी. एक बंदिश आपको सुनाता हूँ, आपने ऐसा देखेंगे. मानसी, हुआ कबीर. So Kabir was again, दास जी, कबीर दास जी. Kabir Das ji was so related to art and culture only. He had अरे his like क्या, कौन थे वो? original- बस एक लाइन, एक वर्ड में बताओ वो कौन थे. So I think Bhakti Saint थे. वेरी गुड, वो भक्ति संत थे, बिल्कुल निर्गुण भक्ति संत. निर्गुण. क्योंकि वो भगवान के अलग अलग रूपों को देखते थे, इसलिए निर्गुण हो गए. वो एक सगुण रूप में नहीं देखते थे. मीराबाई निर्गुण थी, आशिक की सगुण थी. सर मीराबाई सगुन थी सर, कृष्ण सगुण, भक्ति हो. क्योंकि कृष्ण है, उनको हर जगह कृष्ण दिखते हैं. आशिक, व्हाट इज अभंग? So abhang is a type of a, so I have to guess this. करेक्ट. Abhang is type of a small prose दोहे टाइप होता है, इसमें भी. सर आप
हाँ, you can लाइट discuss क्लासिकल that. म्यूजिक, मराठी Yes. सेंट्स, भक्ति सेंट्स, एक नाथ अभंग, तुकाराम नाम एक नाग लेते, तुकाराम, अभंग. अभंग, बहुत इंपॉर्टेंट, टाइमलेस मैसेजेस। मानसी, अगर आप राजस्थान में या आप मध्य प्रदेश में टूरिज्म सेक्रेटरी हो और आपको फोक आर्ट को मॉडर्न टेक्निक के साथ री इमेजिन करना है, फोक आर्ट्स, तो हम्म आप इलस्ट्रेशन देके बताइए आप कौन कौन सी आर्ट को, अगर आप राजस्थान में, तो कौन सी आर्ट को आप कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे उसकी आइडेंटिटी को आप क्या करेंगे उसके लिए? So like we can work more upon museums ओके। for the preservation. So as a tourism also and generating more of finance and revenue aspect हो सकता है. So as an aspect of tourism sector से related like in the hospitality industry. So more of such events which promote the traditional folk व्हाट यू डू फॉर music. फोक आर्ट? कौन सी दो फोक आर्ट आप उठाओगे राजस्थान से और उनको प्रमोट भी करोगे, कैसे करोगे? Sir, in Rajasthan, we can work upon the specific textiles which they are making. गुड, ओके, और? Textiles would be one, and second we can talk about the cuisine. हाँ, क्यूजीन तो ठीक है, बहुत अच्छा, क्यूजीन भी आ सकता है आप, लेकिन जैसे कठपुतली, Puppetry. पपेट्री आप ले सकते हो, देन यू कैन टेक अप फोक डांसेस, कालबेलिया से लेकर आप बाकी वो है वो ले सकते हो आप। Mm. Ashik, what you will do as a secretary of tourism for Jharkhand? So Jharkhand is a very diverse state having several kind of folk art. For example, Chau dance, even Gond art is also there. Other than that, festival, Charam festival, in which tribal they perform certain kind of a dance with bamboo and other suits. They can be promoted with the help of museum. Karachi in museum is there. Rusi Modi Museum is there in Jamshedpur that promotes local tradition and that's it. Apart from that, sir, Okay. Yeah, please. apart from that, online through the online use of media, even in the official organization of certain kind of a meeting, there the starting can be used with the help of a folk promotion of the folk dance, even art. This way, they can be patronized. Okay. Mansi, art washes away from the soul the dust of everyday life. Art washes away from the soul the dust of everyday life. Yes, sir. So it can play very Illustrate करिए, important, illustrate play करिए. very important role as a mental stress booster or buster. So positive sense में or that it can play a major role in that sense of, and it can better help us in terms of better connecting with our roots at the same time. So जो fast life है, specifically when we talk about the urban areas or metropolitan cities, so जो dust वाला element as it is stating, so it can play important role there. It can play important role in healing also, like certain diseases. So Yes, it can bring inclusivity in society, especially able people को भी है, old age है, vulnerable sections हैं, सबको एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबको एक तरीके से बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं. It provides a kind of a solace. It is anti-consumerist idea एक तरीके से. Sir, Yeah. so according to Natya Shastra Bharat Muni, one famous quote is there that art is that which connects with the soul. And so experiential element from the day-to-day lives. So it creates an important impact because it also treats the wound in the mind, psychological treatment हो सकता है art के through. And the second would be जो for example differentially abled, they can also communicate through art. So through the art form we can also diagnose we can use that art for diagnosis for the several diseases also. And sir, through the art form, it can be also make the government can be also made be accountable. For example, street play, street art, natak. For awareness of the certain kind of disease, social issues, art is also used. For example, so, natak, street natak, etc. So I agree with you. Yes, that is true. Very true. लेकिन जब हम बात करते हैं आशिक, म्यूजियम्स एज अ पावरफुल स्पेस, museums are very important public spaces which must get more
attention which must be part of the mainstream life. यूगेन म्यूजियम बन रहा है अभी इंडिया में भी, हम बहुत बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम क्रिएट कर रहे हैं, पीएम संग्रहालय भी है। और उसके अलावा जब हम नेशनल म्यूजियम्स की बात करते हैं तो इंडिया में नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, कलकत्ता में है, सालार जंग म्यूजियम इन हैदराबाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोबल एग्जाम्पल। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट भी है दिल्ली में, आई हैड बीन पार्ट ऑफ ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस इन वन वे और अनदर। और छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, उसको पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहा जाता था। तो इंडियन म्यूजियम कलकत्ता 1814 में हुआ। द इंडियन म्यूजियम इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, आप कह सकते हो। गवर्नमेंट म्यूजियम और आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में है, वहां पर बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट्स का बहुत जबरदस्त काम है। और देयर हैव बीन स्टालवर्ट्स विद whom I had also opportunity to interact। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेयर कलेक्शन है मिनिएचर्स की। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन का कलेक्शन न्यू दिल्ली का जो नेशनल म्यूजियम है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मानसी, म्यूजियम्स और सोशल मीडिया, क्या 5-6 पॉइंट जो है आप लेना चाहेंगे इसमें? So connecting these two things, social media and museums. So जो मेन लाइक अगर हम बात करते हैं अबाउट द यूथ, तो देयर थिंकिंग इज नॉट सो ओरिएंटेड टुवर्ड्स कि उसको हम एज अ सबसे पहले तो करने ये के लिए। बताएंगे, सबसे पहले आप बात करेंगे दैट सोशल मीडिया ब्रिंग्स मोर विजिबिलिटी। हाँ, विजिबिलिटी, यस सर। सबसे पहले विजिबिलिटी लेके आती है, रीच को इंक्रीज करती है, हाँ जी। यंगर जनरेशन स्पेशली आउटसाइड योर ज्योग्राफी करें। हमें टाटा म्यूजियम की बात करनी है तो Ashik can go over there and then can have a visit and then he can create a photo gallery and then we can have a orientation. So that is not possible without visiting otherwise. So सबसे पहले increase reach और visibility है जी सर। enhanced engagement भी है, आप क्वेश्चन पोलिंग कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, डीपर एंगेजमेंट हो सकता है। एंड देन ऑनलाइन कम्युनिटीज ऑल्सो यू कैन क्रिएट। ऑनलाइन कम्युनिटी आपने बना दिया, ग्रुप बना दिया आपने, वीकली मंथली आपने एक प्रोग्राम रख लिया, हेरिटेज वॉक भी कर सकते हैं आप, वर्चुअल वॉक भी हो सकती है, और आप प्रमोशन भी कर सकते हैं इवेंट्स। ऑनलाइन एक वेबिनार भी हो सकता है, क्या आशिक? लेकिन लिमिटेशंस क्या होंगी फिर, मानसी ये बताइए। सो जो डेटा शेयर किया जाएगा, पिक्चर्स या वीडियोस, दे आर नॉट मिसयूज्ड समवेयर। एक पॉइंट और तो सेकंड व्हेन वी कैन टॉक अबाउट कि इतना डीपर पेनिट्रेशन शायद नहीं हो पाए इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो क्योंकि भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है सोशल मीडिया, बहुत जल्दी, लेस डेप्थ है। हाँ जी सर। उसके बाद वर्चुअल प्रेजेंस है, जो एक्सपीरियंशियल इतना नहीं होता। जो फॉर एग्जाम्पल रेड फोर्ट को अंदर जाके जो फील है वो ऑनलाइन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, 3D में नहीं आ सकता। करेक्ट। तो सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब आशिक हम बात करते हैं, एआई का और Yes, आर्ट का, और हम हड़प्पन पीरियड का बात करते हैं, सेकंड अर्बनाइजेशन यानी महाजनपदास की बात करते हैं, न्यू आर्ट फॉर्म्स, डिजिटल पेंटिंग आ गया है, ग्राफिक डिजाइन आ गया, एनिमेशन हो गया, इंटरेक्टिव मीडिया आ गया, एआई आ गया है। तो इसमें ट्रांसफॉर्म तो बहुत जबरदस्त हुआ, क्रिएटिविटी भी है, कोलैबोरेशन भी है, इनोवेशन भी है। तो चैलेंजेस क्या है, कैसे इसको इफेक्टिव बनाया जाए, विजुअल आर्ट को, पेंटिंग को, आर्किटेक्चर को, कैसे? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैलेंजेस first would be the generative AI. So it can generate new types of art which can distort even history or even certain kind of a context. वो एक challenge है. Second would be sir if the art is being used for the purposes or not, if it is for misinformation, creating of enmity between the society or not. लेकिन इसको यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टू rebuild the already destroyed manuscript, even art, for example, destroyed a temple or even other structure can be rebuilt using the AI model. Second would be deciphering of certain languages in a very simple format can be done. Third would be sir subtitle making, even other kind of a PPT model, even video can be made on the several kind of arts which can be disseminated among the people.
for spreading of the language, for spreading of the information regarding the art form. And so fourth would be connecting in having a connecting the existing art form to the new era thinking. For example, we can say a new type of band is also using the Sanskrit theatre, as well as they are augmenting the lyrics using the AI model. For example, instrument use or even which how it can be calibrated. So it caters to the modern age, sir, art. So all these things can be used for the augmentation. जब हम इसी डायरेक्शन में बात करते हैं, अगर हम थोड़ा डीप में बात करें तो रूरल टूरिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, लोकल कल्चर को प्रिजर्व करेगा। ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल स्टाइल जो रूरल कम्युनिटीज का है उसको वो मोटिवेट करेगा। उनके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रूरल टूरिज्म के। जी सर। एम्यूनिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्राफ्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि मल्टीफोल्ड डेवलपमेंट एक सनराइज इंडस्ट्री की तरह बहुत अच्छा हो सकता है। रूरल फेयर्स की बात है। इसी दिशा में यदि मैं बात करूं, so please explain how rural tourism is emerging as a catalyst for economic growth and community empowerment. You have to give example also. Please So tell me. like in Maharashtra, we are seeing that it is being promoted at larger scale, rural tourism. We are promoting more homestays, which Very good. is again more environmentally sustainable also. And when it comes to sustainable tourism promotion, that is one aspect. So then we can, as we talk about the tourists, they can get the feel of that entire ecosystem. So Okay. more interaction with the local communities, like guides और ज़्यादा promote हो सकते हैं, तो that can be one of the job generating areas. And demand for the local again goods जो That means you are saying that can when increase. we are fulfilling not only Millennium Development Goals but also Sustainable Development Goals, जी sir. and it is in the nascent sector. So what are the strategic pillars कि रूरल इंडिया में रूरल टूरिज्म बेंचमार्क बने? उसके लिए स्ट्रेटेजिक पिलर्स क्या होंगे आपके? 6 स्ट्रेटेजिक पिलर आपके क्या होंगे? So first would be the availability of basic services, power, clean बेसिक water, सर्विसेज और बेस्ट सर्विसेज। best services. So एक दूसरा second can be internet connectivity, telecom connectivity, डिजिटल टेक्नोलॉजी। digital technology. थर्ड So third would be more promotion, digital clusters promotion means marketing, that is another pillar. identification sir. Development of clusters, identification of a circuit, जी sir. and then marketing you said, and the fifth one fifth one. So carrying capacity can be Yes, very good. Capacity building. Capacity building of the stakeholders and the carrying capacity of the whole cluster. And the last one should be safety and grievance redressal. You want to say governance. Right. Governance and institutional framework. So you brought all the points. Take always big keywords, and then we can see कि कैसे, जैसे पोचमपल्ली है, धोर्डो है, भुज में कच्छ का एक फेस्टिवल होता है, रण उत्सव बोलते हैं उसको धोर्डो में। अमिताभ बच्चन is also seen promoting it in the, so many advertisements are there. So it's very very important example कैसे promote हो सकता है. And then Indian rural tourism is there can be best tourism village competition. Best tourism villages of India करके बन सकते हैं आपके. They are going to promote. पोचमपल्ली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया. There are other examples also. In all parts of India, everywhere you have a very important development in terms of villages. They are very very important because they showcase the real heritage of all over India. Village competition that we can there are every year it is like that. If you just go and check it. From union territories to all the states, they become part of it. Secondly, we must focus upon lesser known, less explored. For example, Nagaland, Khonomo village in Nagaland, and Madla in Madhya Pradesh. They were recognized under the
upgrade program of United Nations World Tourism Organization, UNWTO. So what we should goal? Our goal is from the first village to the last village. Last village to the first village, that I should say. Border villages already we are celebrating, as already our government says. So first Indian village, Mana. अगर आप देखेंगे तो वो लिखा जाता है, फर्स्ट इंडियन विलेज इज माणा. सो दैट इज हाउ एक एग्जांपल हम ले सकते हैं. देन कम्युनिटी रेनफोर्समेंट होगा, और उसके साथ साथ आप जब बोलेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एमएसएमई, दे विल आल्सो कमिंग इनटू पिक्चर. Ashik, you want to add something? सर एक और एक वर्ड है एमेनिटीज. एमेनिटी शुड बी प्रेजेंट. और जो लोकल ट्रेडिशन उनका पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है. लोकल ट्राइबल्स है, लोकल कल्चर, उनका पार्टिसिपेशन विद द विलेज टूरिज्म. क्योंकि टॉप डाउन मैकेनिज्म हो सकता है ना कि आप एमिनिटीज बना दिए, लेकिन इफ द लोकल पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द सस्टेनिंग ऑफ द टूरिज्म और नॉट, इट क्रिएट ए चैलेंज. क्योंकि अल्टीमेटली स्टेक होल्डर तो वही लोग हैं जो रहते हैं वहां पर. फॉर एग्जाम्पल सर नासिक में वाइन के लिए फेमस है. 40% वाइन वहीं से आता है. शूला वाइन यार्ड है वहीं पर भी है. तो इनके महाराष्ट्र वहां पर भी ऐसा है कि आप जाके वहां रह सकते हो, होम स्टे है. एट द सेम टाइम 3-4 एस्पेक्ट है आप विलेज टूरिज्म प्रमोट करने के लिए कि फार्म स्टे, फार्म में जाके आप काम करेंगे. फिर वॉकिंग स्टे, कि आप वॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. तो ये सब इमर्सिव एक्सपीरियंस है. ये भी एक अलग फॉर्म ऑफ टूरिज्म. वेरी ट्रू. सो टेकिंग दिस थीम लिटिल फर्दर, जब हम बात करते हैं रीडिफाइनिंग ऑफ टूरिज्म, बिकॉज हम बात कर देते हैं ओवर क्राउडिंग हो जाती है, देन वी ऑलवेज गेट क्वेश्चंस इन द मेन एग्जामिनेशन आल्सो, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दोज ओवर पॉपुलेटेड स्पॉट्स. इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, औशिक, आपको सेक्रेटरी बनाया जाए, सेक्रेटरी फेस्टिवल क्यूजीन एंड म्यूजिक ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? So Northeast is one of the highest diverse region in India. For example, there are several important festivals. For example, Hornbill Festival, Bihu, even Dimsa language is there, which असम सिल्क फैब्रिक्स का है. yes, silk fabric, Muga silk, yes sir. मुगा Yes. मुगा है, गोल्डन मुगा है, इंडी है, पाट है. Yes sir. Satriya festival is there. Kamkya, yes sir. केक राइस, पिथा इज आल्सो देयर. एंड सर क्यूजिन बात किए तो बैम्बू राइस, बैम्बू चिकन, बैम्बू इज यूज्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड श्रीमंत शंकर देवा कला क्षेत्र. यस, श्रीमंत शंकर देवा, यस, ये आप लेके आइए. और तो सत्रिया डांस हो गया सर, मणिपुरी संकर सत्रिया. तो ऑल दीज एस्पेक्ट कैन बी प्रमोटेड विद द हेल्प ऑफ, फॉर एग्जाम्पल माइस, कि आप वहां जाकर रहिए, बिजनेस भी करिए, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू जस्ट सपोर्ट द लोकल ट्रेडिशन एंड कल्चर थ्रू द यूज ऑफ होम स्टे. वहां पर भी कर सकते हैं. सेकेंड वुड बी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, हाउ टू प्रमोट देम थ्रू द वेरियस चैनल्स. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग हो गया, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मीटिंग हो गया, सब में. एंड सेम टाइम ऑनलाइन ट्राई फूड या फिर gotravel.com के थ्रू भी जैसे एवरी अदर ट्राई आर्ट्स फॉर्म कैन प्रमोट. बिल्कुल, जैसे आपका चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इन मेघालय, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इन मेघालय, वी कैन नोट. ऑल्सो चापचारकूट, वेरी वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट. चापचारकूट, CHAR, मिजोरम, आइजोल में ये है. मतलब बिगेस्ट फेस्टिवल जो अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को, मार्च के टाइम पे होता है चापचारकूट फेस्टिवल. एंड देन यू हैव चिराउ डांस, बैम्बू डांस, वी वेरी फेमस. You clap the bamboos and you jump over. It is part of Republic Day parades also. Chirau dance. And Shirul Lily Festival in Manipur, Lily Festival, Manipur state flower है lily. Shirul Lily Festival. So these are very important examples of ethnic festivals. Ethnic festivals linked with the rest of India, like Monpa tribe of is known as Scotland of East. The two places which are wettest in the world, Ashik, we know about it. Can you name them? So Cherrapunji and one more Mauser. Mauseram, correct.
So it is increasingly getting crowds every year. Huh? And then you have Yes, sir. got indigenous communities के जो sacred groves हैं, जैसे हम राजस्थान में भी sacred groves की बात करते हैं, they are also getting very much being attracted by the rest of India, and also even foreign tourists with due process and due permits. So these are examples. There's Zero Festival, Zero Music Festival in Apatani. Zero, Zero, ZARO, Zero Music zero, Festival. zero. Apatani Valley. Where is Apatani Valley? Apatani Valley. I think Arunachal Not Pradesh. so. हिमाचल प्रदेश, करेक्ट. Unnatural. तो हॉर्नबिल हो गया, आपातामी हो गया, टीमी टीमी टी फेस्टिवल, TEMI, टीमी टी फेस्टिवल, सिक्किम. It is in Sikkim. So these are some examples which we can pick up. मौजौली आइलैंड तो हुआ ही था, हमें मालूम है. मौजौली आइलैंड का नाम हमने पहले भी यूज किया है. Largest Attraction, islands in the मौजौली आइलैंड जो जिसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस भी देने की बात. लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर बेड है एक तरीके से, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर, जो हार्ट, it is in the heart of Brahmaputra river, and it is the epicenter of Vaishnavite culture, शंकर देवा जी. सो ये तो बात हो गई फेस्टिवल्स की. तो अगर आप फूड की बात करें, cuisine की बात करें, cuisine is bamboo shoot. करेक्ट, It is very part of the cuisine. Then rice beer is very important in Assam and surrounding region. Then other kind of a cuisine is also promoted in northeast, which can be non-vegetarian. And apart from that, red rice is also there. करेक्ट. अगर हम बात करते हैं रूरल टूरिज्म की, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रूरल टूरिज्म? Characteristics of rural tourism. Yes. So, rural tourism can be of the pilgrimage one, pilgrimage site, for example. Then it can be fair festival, Pushkar, even in Pushkar Mela in Rajasthan. It can be based on farm stay. For example, we have said just discussed When we say Nashik. characteristics, for example, rural India, that area will be having low density. That is Low one density. characteristic. Oh, What is the land use? Is it Land. agriculture, forest hai? What is the traditional social structure and lifestyle? So these all things will be the key when we want to develop rural tourism, because they are the very important example of strategy making, that how you are going to promote tourism. Just a Bhutanese way of development of tourism is one way. And then our Mission Life with our Honorable Prime Minister Sir has started. Mission Life will also become part of it. Uttarakhand is also promoting homestays, rural tourism. It should not be driven by material achievements. It should be innovative in nature. Farm, yes, sir. agriculture experience. Homestay or farm stay, it was on the basis that local communities are part, that they are themselves developing, rather than government is developing homestay. Correct. Because it will be commercialized later on. And then very importantly, volunteer tourism. Volunteer. You are volunteering. You are enjoying. For you the are social contributing, service, You are teaching contributing, children. You are innovative. creating art forms. You are, life-changing experience you are getting in return. That is how. Social bonding also you are getting. For example, say NSS. If we can say NSS strives for voluntary tourism, National Social Service. Because India is committed to the long-term, low carbon development. We have to reach the goal of net zero by 2070. So that's why amenities is a very important point, and access to healthcare, sanitation and waste management, access to safe water. These are the basic very important things, जिससे शिमला जो शिमला है वो ना बने. ग्रीन पावर होना चाहिए, स्ट्रीट लाइटिंग होना चाहिए, वुमेन सेफ्टी के लिए स्मार्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस होने चाहिए, डिजिटल सर्विसेज होना चाहिए, ट्रैवल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, and most importantly,
Tourists must be aware of the local sensitivities, dressing, gender, food, alcoholic beverages, religious sentiments, behavior and customs, jargons, use of language. These all things will help us to create a great setup for rural tourism. That's what we can say. If we speak about colonial time period, then we had a word called dak banglas. डाक बंगला होते थे, Yes, sir. पोस्ट ऑफिस, IPOS, Indian Postal Service. करेक्ट, मेल, They are the managers. हाँ, sir. या Mail was a very important tool for dissemination of information because right now internet is there, other kind of activities there, but back then mail was there. So Dak Bangla, डाक post office. So they are in the prime location of every state and capital. बिल्कुल. So very important. Postal heritage can play a very important role also. They have got buildings, they have got heritage, and what we can say is that, for example, Chowda Maidan Post Office in Shimla, it's a very beautiful architecture built up in 1910. Postal Museum building in Bengaluru, 1804. Fort Kochi Post Office, 1900. So that's what we can really promote. They are also one of the important landmark buildings. Everywhere they are, whether it is Gwalior, whether it is Nagpur, whether it is Pondicherry, because wherever British communication system was to be established, Chennai is very important. So we have to understand that these heritage buildings must remain as per original design, must be accessible to public, and if they can be sustainably promoted on the public-private partnership mode, then it will be very great. So postal heritage tourism is very important. मानसी, अगर हम बात करें कल्चरल ट्रेडिशंस जो है, रूरल क्राफ्ट, जो रूरल क्राफ्ट्स हैं, और अगर हम बात करते हैं जैसे काशी है, कांचीपुरम है, उनका हैंडलूम है, यू हैव कलामकारी, पोचमपल्ली साड़ीज, कटक का सिल्वर फिलिग्री है. So how do you think that must be promoted? So one district, one product scheme is one of the direct interventions where we can say that adequate capacity generation can take place and there will be better market accessibility or connectivity. So more digitized way of promotion can be another method. And then thirdly, we can talk about the GI tag products promotion. So how we can focus more upon even their exports at the same time, so that they have wider reach international markets. औशिक, आप लद्दाख में कौन सा टूरिज्म प्रमोट करोगे? Ladakh. So Ladakh is having a very pristine environment. The tourism which can be promoted is first is dark sky tourism, Hanli. The second would be sir Hemis High Altitude National Park is also there. They can be promoted. Third would be sir monasteries based tourism, Buddhist circuit tourism, and Sanskrit chanting also famous in Ladakh. Buddhist chanting. So all these things can be promoted, sir. Okay. And it's a first border village. For example, sightseeing of the border post to LAC can be also promoted. Sir, also we are seeing recently like bike tourism. So people traveling हाँ. through bikes to Ladakh. वो तो भी है, same ठीक है. thing, हाँ, लेकिन same. जैसे हमने बात की, एग्रीकल्चर टूरिज्म हो सकता है, इंडस्ट्रियल हेरिटेज साइट्स टूरिज्म हो सकता है. इंडस्ट्रियल हेरिटेज साइट्स you have so many, Jharkhand, Jamshedpur में, जैसे Jamshedpur is a very important example. West Bengal, Raniganj है West Bengal का, that's another example. Like Germany, you have Ruhr region. Similarly, we can create more examples. Dark sky tourism already we said. Local communities को engage करने की बात हमने की. So these are very important. And you have to go to the beyond the obvious scope of understanding tourism, and then only we can promote it. जैसे adventure tourism है,
ट्रैकिंग है हिल्स में, ट्रैकिंग ट्रेल्स है, बट दे मस्ट बी वेरी मच इको फ्रेंडली। फ्रेजाइल एरिया को हमें वो नहीं करना है। यू हैव पैराग्लाइडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। चेनाब रिवर के ऊपर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है। दैट इटसेल्फ इज अ ग्रैंड एडवेंचर ऑन जंस्कर, जो ये आपका रिवर के वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट वो अमेजिंग डेवलपमेंट्स है। सो रूरल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अट्रैक्शन भी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी भी चाहिए, अकोमोडेशन भी चाहिए, एम्यूनिटीज भी चाहिए, और एक्टिविटीज भी चाहिए। बस ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5 है। 5A: एक्सेसिबिलिटी, एम्यूनिटी, अकोमोडेशन, एक्टिविटी। एक्टिविटीज। उससे ही महोत्सव और उत्सव बनेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हम बात कर चुके हैं। मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ हो सकते हैं, जैसे बंगाला, लोहड़ी, नोआखाई, पोंगल की बात कर ली हमने, मकर संक्रांति की बात की। हिंदू ट्रेडिशन से हम लिंक कर सकते हैं। रूट टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट्स अभी हमने दोबारा उसको प्रमोट भी हाँ किया। सर, ये न्यू थिंग था कि नॉस्टैल्जिया, कि आप यस, वापस आ रहे हैं अपने रूट्स गिरमिटियास पे। के लिए, गिरमिटी, हाँ। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, सिंधी के लिए हो गए सर, सिंधी एक के तरह लिए से। हो गया। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभ मेला भी इसमें आ जाएगा। नागा जात्रा, जो मेदाराम जातरा मेरा तेलंगाना का एशिया का तेलंगाना। लार्जेस्ट फेयर है। मैंगो ईटिंग कंपटीशन भी होते हैं यूपी में। देन ऑन द टॉप ऑफ इट फ्लोरिकल्चर एक अदर एग्जांपल आ जाता है। फ्लोरिकल्चर, ट्यूलिप गार्डन है सर। बिल्कुल। क्या ये हम रूरल लोग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, चेरी प्रोडक्शन। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, रीच, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। पंजाब में होता है किला रायपुर फेस्टिवल, स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, बैलगाड़ी दौड़ और ये और सब होता है। योगा भी उसका पार्ट आ जाएगा। तो ट्राइबल टूरिज्म हो गया, चाहे मजौली आइलैंड की जैसे हमने बात की, अराकू वैली आंध्र प्रदेश में, वो भी ट्राइबल टूरिज्म के लिए फेमस हो जाएगी। महाराष्ट्र में जैसे रत्नागिरी है, नेचर हैप्पीनेस के लिए हो सकता है। कोनियाक टी, कोनियाक टी रिट्रीट नागालैंड में हो सकता है। केरला गॉड्स ओन कंट्री हम बात कर चुके हैं पहले भी, कुमारकम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कोट्टयम इन केरला इज ऑल्सो अनदर एग्जांपल। मध्य प्रदेश में हमने बात की माडला। ऐसे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भुज में आपका अर्जकपुर, जैसे अर्जकपुर इज एन आर्ट एंड क्राफ्ट टाउन। जगपुर। अजरक, अजरक नॉट अर्जक, अजरक। अजरकपुर, अजरक। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चंदेरी की हमने बात की है पहले भी, पानीपत की भी दरी की बात हो जाएगी। There are a lot of other examples also which come into picture. So I am just giving you a broad idea. And on the same lines, let's create a kind of a 1 or 2 page, very, very conceptualized small note sheet so that we can use it in the examination. So this is all for this session. We'll get back with a new theme as per the syllabus and the demand soon. Thank you very much.